Hello everyone, welcome to my channel. From today I'm going to start new series about reading. In this series I will cover passages from Cambridge books and I will make you understand how to do different types of questions so that you can improve your reading scores. Today's topic is filling the blanks. I will do the questions, I will discuss the questions related to filling the blanks and the passages from the Cambridge 17. I'm going to discuss the passage number 1. So let's see what are the tips and tricks by which you can improve your reading skills. Without wasting the time, let's get started. Follow these steps to solve filling the blanks questions quickly. The first step is read the question carefully and understand it properly. Now it is very important to read the question twice or thrice so that you can understand it properly, so that it could be very clear to you. You should know what they are asking for you. So read the question twice or thrice. Second step is make a guess of your answer. In this, you can check out that whether they are asking for a noun, whether they are asking for an adjective, what could be the answer, so that it could be easy for you to look at the correct answer. Okay, so in step number 2, you have to make a guess. Then step number 3 is read the passage. At the end, when you have done with these 2 steps, then start reading your passage. You have to make a guess. You know what you are going to look for. So definitely you will find your correct answer. So I'm going to follow these steps in this video so that I can find my correct answers. Let's see how. Step is to read the question. The question is, the dash of London increased rapidly between 1800 and 1850. Now always follow these instructions. Read these instructions very carefully. So my answer should be of one word, because it is clearly mentioned here. Now I have understood the question. This is very simple. The dash of London increased rapidly. So something has increased from 1800 to 1850 and I have to find out what has increased. Now I am making a guess that it could be a noun. Definitely it could be a noun. So I'm going to look towards my answer and it should be a noun. After this, I am going to read my passage. The topic of the passage is the development of London Underground Railway. I'm going to start reading. In the first half of 1800s, London's population grew at astonishing rate and the central area became increasingly congested. Now they are saying that in the first half of 18th, what happened? That the population has dramatically increased. It is increasing at astonishing rate, means surprising rate, and the area has been increasing congested, means the crowd has increased. There were so many people and due to that the area become very congested, very crowded. In addition, the expansion of overground railway network resulted in more and more passengers arriving in the capital. Now along with this, there is the expansion of railway also. So railway stations have also been built, and due to that the more passengers have been arrived into the capital of the city. Now I was looking for the answer of the noun, that there is something which has increased dramatically. I got my answer. This is population. Population is the correct answer because it is increasing by astonishing rate. And they are also saying in the first half of 1800. Now this is first half, means they are talking about 1850. So I have to find out what has increased from 1800 to 1850, and the answer, correct answer is population. Population has increased. Okay, let's read the next blank. The blank is the proposed solution. चार्ल्स पियर्सन अ सॉलिसिटर सजेस्टेड बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड रेलवे. कोई चार्ल्स पियर्सन पर्सन है जिसने क्या सजेस्ट किया है कि हमें अंडरग्राउंड रेलवे बनाना है. बिल्डिंग द रेलवे वुड मेक इट पॉसिबल टू मूव पीपल टू बेटर हाउसिंग इन द डैश. अगर ये अंडरग्राउंड रेलवे बन गया तो जो पीपल है हम उनको मूव कर पाएंगे टू बेटर हाउसिंग इन द डैश. कहाँ पे मूव कर पाएंगे? जहां पे उनको बेटर हाउसिंग मिलेगी. सो ये जो ब्लैंक है, इस पे जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा कि हमें कोई ऐसी चीज पता करनी है जहां पे हम पीपल को मूव कर सके. सो लेट्स रीड द पैराग्राफ. अमंग द मोस्ट वोकल एडवोकेट्स फॉर सोल्यूशन टू लंडन्स ट्रैफिक प्रॉब्लम्स वर चार्ल्स पियर्सन,
who worked as a solicitor for the city of London. Now, solicitor means lawyer. Instead of lawyer, you could use the word solicitor. He saw both social and economic advantages in building an underground railway that would link the overground railway stations and together clear London slums. नाउ उसने क्या सजेशन दिया, चार्ल्स पियर्सन ने ये सजेशन दिया कि हमें जो है वो अंडरग्राउंड रेलवे बनाना है. उससे क्या होएगा, ओवरग्राउंड रेलवे जो बड़ा कंजस्टेड हो चुका था उससे प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और क्लियर लंदन स्लम्स, इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी. जो स्लम्स वहां पे झोपड़ियां बनी हुई थी वो भी चीजें वो जो है वो सॉल्व हो जाएगी क्योंकि सिटी बहुत ओवरक्राउडेड हो गई थी. Now we have to read this line very carefully क्योंकि ये लाइन से हमें पता चलेगा where could be our answer. We have done read till this at the same time, so these lines are matched. फर्स्ट लाइन में भी चार्ल्स पियर्सन ने यही सजेशन दिया एंड वी हैव डन आवर रीडिंग टिल दिस. इट मींस कि अब नेक्स्ट हमारा आंसर जो है वो आने वाला है. लेट्स रीड. His idea was to relocate the poor worker who lived in the inner city slums to newly constructed suburbs. नाउ उन्होंने बोला कि उसका जो ये प्लान था उसमें क्या उसका मोटिव था, जो पुअर वर्कर है, जो पुअर पीपल है, हमने उनको मूव करना है. कहाँ पे रहते हैं वो, इन द सिटी स्लम्स, जो सिटी के अंदर झोंपड़ियां हैं वहां पे रहते हैं, टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबअर्ब्स, उनको हमको सबअर्ब्स जो कि न्यूली बनेंगे वहां पे शिफ्ट करना है. सो दिस इज आवर आंसर. डेफिनेटली दिस सबअर्ब इज आवर आंसर. वी गॉट आवर आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द थर्ड ब्लैंक. अ नंबर ऑफ डैश एग्रीड विद पियर्सन्स आइडिया. कोई ऐसे कुछ बोल सकते हैं, कोई चीज है जो कि पियर्सन्स के आइडिया के साथ मैच करिए, वो एग्री करिए, वो कह रही है हाँ ठीक है. ऑब्वियसली ये कोई लिविंग थिंग ही होएगी, कोई नॉन लिविंग थिंग तो एग्री कर नहीं सकती. तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ डैश, कोई पर्सन्स का नंबर होएगा, या तो वो बता सकते हैं कि इतने पर्सन थे वो एग्री कर रहे थे. सो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कोई पर्सन का आएगा कि कोई पर्सन जो है वो एग्री कर रहे हैं. सो लेट्स रीड द पैराग्राफ अगेन. Pearson's idea gained support among some businessmen, and in 1851 he submitted a plan to Parliament. Now उसको बहुत सारा सपोर्ट मिला, किसके साथ, बिजनेसमैन जो है उन्होंने काफी सपोर्ट किया. उन्होंने बोला यस दिस प्लान कुड वर्क. सो डेफिनेटली आवर नेक्स्ट आंसर इज businessman. A number of businessmen agreed with the person's idea. So we got our 3 answers. Let's read ahead. Fourth question is, the company initially had problems getting the dash needed for the project. अब कंपनी को इनिशियली कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग, वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव टू चेक आउट दैट what is the field where the company is facing the problem. So let's read the paragraph. The two groups merged and established Metropolitan Railway Company in August 1854. The company's plan was to construct an underground railway line from the Great Western Railway Station, Paddington, to the edge of the city at Farringdon Street, a distance from almost 5 kilometers. We are not getting any problem, so let's move ahead. The organization had difficulty in raising the funding for such a radical and expensive scheme. Now this is our answer. They are saying that the company is facing difficulty. Difficulty is the synonym for the problem. So our answer is funding. The right answer is funding. We have got our answer. We are moving towards the next blank. The negative article about the project appeared in the dash. We have to check out something where the negative article is appeared. कोई ऐसी चीज जहां पे कि नेगेटिविटी बताई गई है इस प्लान के बारे में कि ये प्लान जो है would not work in the future. We have to check out where is that negativity. Let's read from this. Not least because of the critical articles printed by the press. Now critical articles means negative articles. So जो डिफिकल्टी थी फंडिंग की वो क्यों थी, ड्यू टू 2 थिंग्स. इट वाज वेरी एक्सपेंसिव स्कीम. एक तो स्कीम बहुत एक्सपेंसिव थी और दूसरा आर्टिकल्स जो हैं वो क्रिटिकल आर्टिकल्स, नेगेटिव आर्टिकल्स जो थे वो प्रिंट किए थे बाय द प्रेस. सो डेफिनेटली नेक्स्ट आंसर इज प्रेस. नाउ वी गॉट आवर आंसर. देयर इज नो नीड टू रीड द नेक्स्ट दीज लाइन्स. जस्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट question is the construction.
The chosen route did not require many buildings to be pulled down. जो रूट उन्होंने चूज किया था, बहुत सारी बिल्डिंग को गिराने की वहां पे जरूरत नहीं थी. The cut and cover method was used to construct the tunnels. So cut and cover method जो है वो यूज होना है. But the main question is, with the completion of the brick arc, the tunnel was covered with dash. अब जो टनल है वो किसके साथ कवर हुई, वो है हमारा आंसर. सो लेट्स फाइंड आउट. अब इतना सारा, क्योंकि ये है हमारा पैसेज 1, देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम. हमें पैसेज की डिटेल में नहीं जाना, पियर्सन ने क्या किया है हमें वो फाइंड आउट नहीं करना. वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट आवर आंसर. सो बेस्ट ट्रिक ओवर हियर इज जस्ट टू चेक आउट द प्लेसेस वेयर योर आंसर कुड बी. सो कट एंड कवर जो है, मेरे को इस पूरे पैसेज से ये सामने ये कट एंड कवर क्लियर हो रहा है, ये सामने ये दिख रहा है विद द साइन. सो डेफिनेटली इसके आगे ही आंसर होएगा, इसके पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि जो क्वेश्चंस है दैट शुड बी इन द हायरार्की. आंसर्स आपको हायरार्की में ही मिलेंगे. सो इससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव अहेड. यहां से स्टार्ट करेंगे हम. अ ट्रंच अबाउट द 10 meters wide and 6 meter deep was dug and sides temporarily help up with the timber beams. Brick walls were then constructed. ब्रिक आर्क जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. उसके बाद जो टनल है उसको किसी चीज के साथ उन्होंने कवर किया है. सो फाइनली brick arc was added to create the tunnel. The 2-meter deep layer of soil was laid on the top of the tunnel and the road above rebuilt. अब ये है हमारा आंसर. सॉइल, जो सॉइल है वो उसके साथ उन्होंने टॉप ऑफ द टनल उसको कवर कर दिया और जो रोड है उसको दोबारा बनाया गया. सो डेफिनेटली दिस इज द आंसर. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सॉइल. ओके, नाउ चेकआउट कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया. मैंने ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा. आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट माई आंसर. मेरे को कट एंड कवर जो है वो सिंपली यहाँ से विजिबल था. सो मैंने जस्ट आई रीड अहेड, मैंने उससे आगे ही स्टार्टिंग की. आई नो कि आंसर हायरार्की में है, कट एंड कवर के आगे ही आंसर होएगा. सो डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग में. Tips and tricks are very important. If you follow those tips and tricks, definitely you can save your time. Okay, now let's move ahead. Okay, there are no further blanks. These are the 6 blanks which we have to fill, and we have just completed this blanks within 4 passages. So these are my tips and tricks. Definitely in another video I will share another question type. So stay tuned with me for further updates. Till then, bye bye. Thank you.